Uh, I think I should be live. Hi, good evening, everybody. We are going to trade Nasdaq and gold today. Gold has been really amazing in the London session. All the gains of the London session was wiped just like an hour, within an hour. I have no reason to know why, but it won't. If NQ wants to make a good move, it might have happened, or London would have booked their profits. So I'll show you all of that. I took a buy a bit late on the gold right now, and let's see what happens there. Um, so I'll show you what I'm talking about right now. So what gold did was, so this is on a 15-minute time frame, and since 24th, yesterday, on the futures chart, it has been dipping, going up, dipping, going up, so making an higher high, higher low formation. If you follow this trend line, it has beautifully tapped here. This is today at 145, and from 3015 to 3030, that's like 150 pips का profit हमें दिया था इन्होंने. So I could capture some of it, not all of it, because I am still generating my power to hold. अभी भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं होल्ड कर पाऊँ. मुझे ऑनेस्टली 40 पिप्स दिखा प्रॉफिट में, और फिर ये रेड कैंडल दिखी, तो I should have kept my SL here, but I kept my SL right here. Took that SL, it went up. Honestly, SL टच करने से 1-2 पिप पहले मैंने ही मैनुअली क्लोज कर दिया, वो मुझे नहीं करना चाहिए था. ये जो डिप आई है यहाँ पे, so I was doing something else. I'm trying to make my streams better, sound better, look better, so trying to do all of that. But anyways, ये डिप हमें जो यहाँ पे दिखी, so मैं थोड़ा सा, जब इसने पॉजिटिव मूव दिया लगभग यहाँ पे, ये यहाँ पे, हाँ ऑलरेडी वी हैव अ बाय हियर. सो ये इसने जब पॉजिटिव कैंडल बनाई, हल्का सा रिट्रेस कर रहा था, देन वी टुक अ बाय. और immediate target is right here, the liquidity, if it wants to, if NQ wants to grab this and go through, my immediate target is here, but I would still want to hold this. So right now, because we are in almost 40 pip profit, I'm going to keep this at break even so that we don't lose any of it. This is a risk free trade right now. ये तो हो गया हमारा गोल्ड का जो हम चल रहा है. गोल्ड का मुझे अभी भी यही लगता है कि गोल्ड माइट टच दिस लेवल हियर टुडे. आई थिंक इट माइट डू दैट. देखते हैं क्या करता है गोल्ड, बट अभी के लिए अपना इमीडिएट टारगेट ये रहेगा. फिर हम अगर ये यहाँ ऑलमोस्ट टैप करने वाला होगा तो आई कीप, लेट्स सी व्हाट वी कैन डू. सो फार सो गुड, रिट्रेसिंग अ बिट बैक, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है चलेगा. एनक्यू पे आते हैं. So this is an hourly chart of Nasdaq. Nasdaq हमें 22nd को, प्लीज क्लोज. Nasdaq हमें 24th को दिखा गैप अप, और उसके बाद से Nasdaq ऊपर ही गया है. Nasdaq आज दिन में 2:30 बजे से it went from 290 to 430. तो यूजुअली इतना बड़ा मूव आता नहीं है Nasdaq में बिफोर द US मार्केट ओपन्स, बट इट डिड हैपन. हमारा इमीडिएट टारगेट ये है 543. Although 500 is a big round number, so I'll stay cautious at 480, 500 levels. So I'll just mark it. कहाँ गए, ये रहे. So this is the level I would want to be cautious in. Yep, right here. I mean 20 minutes बचा है अभी भी मार्केट खुलने में. मुझे तो अभी ही लगता है कि अभी टैप कर दियो, पता चला मार्केट खुला एंड इट गोज एवरीथिंग सेल्स ऑफ. बट गिवन द वोलेटिलिटी प्री मार्केट, we'll have to stay cautious and take trades. So that's that. Gold is looking good so far. गोल्ड में कुछ भी इशू नहीं दिख रहा है हमें. दिस इज एन गोल्ड में एक चीज अगर आप देखो तो दिस इज मोर लाइक एन इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न. इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न टेक्निकली बाय बुक्स अगर हम देखें तो होना ये चाहिए कि ये गिरा, पोल बना, zigzag and it drops. But when it does not drop, what it does is ये टैप करके ये सीधा ऊपर चला जाता है. तो ये ड्रॉप का मूव इतना अच्छा नहीं आता जितना इसका रिवर्सल मूव अपवर्ड्स आ जाता है. सो उसके लिए मैं देख रहा हूँ, मुझे तो लगता है कि ये ऊपर जा सकता है. और अभी another thing that I want to tell you guys, if we go on a 1 day time frame, we don't see it here. I'll just
Where are you? Right. So, two things here. पहला, flag का pole, flag, pole, flag. So, ये जो पोल होता है इसका टारगेट यूजुअली हम ऊपर देखते हैं, जो मैंने एनालिसिस वीडियो में डाला था एंड इट वर्कड ब्यूटीफुली. जो मैंने एनालिसिस में डाला था, इट touched the lower trend line and spiked up like this only on the bigger time frame, on the 15-minute time frame. If you see, I'll also try to show it to you right here. But अब यहाँ पे क्या है, 4 आवर में ये एक डबल बॉटम भी बना चुका है. एंड लुक एट दैट, देयर इज अ गुड स्पेस बिटवीन दीज टू बॉटम्स. तो नेकलाइन तोड़ता है अगर और सस्टेन करता है तो हमें यहाँ तक का टारगेट तो इजीली दिख रहा है. So I am actually expecting a really good move in NQ right now. NQ session, न्यूयॉर्क सेशन देखते हैं. पहला तो ये. As far as Nasdaq is concerned, I would want to wait for a few minutes मार्केट खुलने के बाद. उसके बाद उसका एक डायरेक्शन अगर समझ में आता है तो I'll take that trade, because initially I do not know what the NQ will do. मतलब nobody knows, but बहुत बार होता है कि हमें एक फ्लो में मिल जाता है कुछ पॉइंट्स, बट मुझे वो नहीं चाहिए आज, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये इनिशियली खुल के क्या करना चाहेगा पहले. इट माइट सो हैपन दैट इट टचेज राइट अवे इवन प्री मार्केट और उसके बाद गिर जाए, और या फिर पूरा ही चला जाए. तो देखते हैं, हड़बड़ाएंगे नहीं आज एनक्यू में, क्योंकि एनक्यू काफ़ी वॉलेटाइल है. ये आप देख रहे हो, दिस इज लास्ट 2 आवर्स का 3 आवर्स का ये मूवमेंट है. स्ट्रेट अप डाउन अप. इट वॉन्ट्स टू गो अप ऑब्वियसली. देखते हैं. बाकी तो कुछ खास न्यूज़ है नहीं आज. इफ यू सी एप्पल ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, डू आई शो यू? आई विल ट्राई टू शो यू इट. I will try to show you. So I'll bring this here and I'll show you. Come on, give me a moment guys, I'm so sorry. All right, sorry for that. So on a daily time frame, Apple was looking extremely bad, like bearish. बट अभी मुझे ये समझ में आता है, यहाँ पे इसने बहुत ही अच्छा बुलिश कैंडल बनाया है यहाँ पे, और ये मोर ओवर ये पुश्ड अप खुल रहा है. बट इट हैज़ टैप्ड दिस, बट यू सी एनक्यू खुलने वाला है 15 मिनट में और ये ऊपर ही खुल रहा है. प्री मार्केट भी थोड़ा सा बिल्कुल ज़रा सा नेग्लिजिबल अप दिख रहा है हमें. तो अगर हम ये सोचते हैं कि इसका भी 50% अगर हम कैप्चर करके देखते हैं, जो फॉल था यहाँ पे इसे देखते हैं, तो और इमीडिएट रेजिस्टेंस इज राइट हियर. तो हो सकता है कि एप्पल इसे टच करे तो और चला जाए नीचे फॉर सम करेक्शन, एंड एनक्यू इसके हिसाब से भाग जाए नीचे. पहला. दूसरा, एनवीडिया. डू वी हैव समथिंग ऑन एनवीडिया? एनवीडिया ने न्यू चिप लॉन्च किया, ये सब तो हमें पता है. अलीबाबा चेयरमैन कुछ उल्टा सीधा बोल चुका है इसके बारे में. चाइनीज स्टॉक सेट किया है. एनवीडिया भी बहुत बड़ा चाइनीज मार्केट के लिए है, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग है, जो भी है ठीक है. ऑलराइट, वेरी साइडवेज काइंड ऑफ अ पैटर्न. ये मुझे चाहिए था देखने के लिए कुछ, बट कोई काम का है नहीं, सो विल क्लोज दैट. ऑलराइट, so more of a range altogether, but it's a huge range for us. अभी देख रहे हैं हम लोग ये गैप अप ही खुला है और ये ऊपर ही जाने के कगार पे है. If you see on the 4-hour time frame, yesterday's candle is this,
today's candle is this. So no, not a gap up. Trying to retrace, but this is a double bottom. डबल बॉटम का नेक लाइन पे आके अगर ये वापस ऊपर जाता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट लगभग यहाँ का रहेगा 125. दिस गुड एस नाउ यू सी. अब ये कैंडल देखो, रिवर्स ये कैंडल देखो. सो not all technical analysis works as per the books, right? You have to judge by yourself. All right, so that's that. Nvidia can take a hit lower. We will see gold, what the gold is doing right now. Gold is doing bad things. All right, so I'll just remove this, keep this on my other screen, and look at that. Look at that, like 0.6, 0.8 pips. I am wanting to close this. Yep, should definitely close. ये हमारे में एंट्री वाला बॉक्स कहाँ है? Sorry for that. Because NQ is about to open, I did not want to risk. और मुझे वो I don't know, wealth chart has to do a lot of bug fixing. जो दिखना चाहिए वो दिख नहीं रहा है, जो भी है ठीक है. So that's that. अभी should open NQ right here. I'll trade micros. That's what I want to trade today. यार ये क्या है? अगर देखो, आप ये देख रहे हो, अब मैं इसको यहाँ पे ना गोल्ड डाल रहा हूँ. अच्छा, इसको इसके ऊपर जाना था. All right boss. All right, making it to 5 minutes. I'll use US 100 here. I'm going on a bigger time frame to see 3 point. All right. Good. अभी एक चीज और है, जहां से इसने स्टार्ट किया है ऊपर जाना, उसे अगर लेते हैं अपन, और अगर इसको स्ट्रेट अवे ऊपर ही जाना होगा तो उसको भी ध्यान में रखेंगे. That has to be 20190 on the US 100 and ISIS chart. On the 5-minute time frame, this thing is making a double bottom. Look at that. Just before the market opens. एक सेक. I hope my sound is okay. All right. What do you want to do, Nasdaq? अच्छा, अभी चीज यहाँ पे गायब हो गई है, जो कि हमारा ये लाइन है यार. इससे ग्लोबली
Sorry for that again. A lot of things happening in and around my office and home. So dealing with a lot of people and workers. So कुछ चीज़ें हैं जो मुझे मैनेज करनी पड़ रही हैं अभी. There is no option. Alright, 7 minutes to US market open. हमारा स्ट्रैटेजी यही है कि हमें होल्ड करके देखना है पहले कि what NQ wants to do, if it wants to take some resistance or it wants to go up. इसे यहाँ पे मार्क में फिर से कर लेता हूँ जस्ट इन केस, क्योंकि चार्ट मूव हो जाते हैं अपने आप और वो मिल नहीं रहा यार. कहाँ हो भाई तू? ये रहा. Alright. I don't want 7 to 3. This. Good. Are you serious? Alright. ये एक्सटेंड क्यों है? एक्सटेंड मत हो ना तुम. Can I? Don't extend. Alright, good. अब एटलीस्ट मैं कहीं क्लिक करना चाहूँगा तो ये मूव नहीं करेगा. This is my immediate resistance. Are you really? I mean, what the? इसे थोड़ा सा हटा देते हैं. चलो ये तो समझ आ गया. इमीडिएट रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे और यहाँ से फिफ्थ चैनल वापस से गायब हो जाता है. चलो कोई बात नहीं. दिस इज द लेवल दैट वी हैव टू बी कॉशियस इन. सो इसे भी एक जोन बना लेते हैं यहाँ पे. 480 से 500 का लेवल जो है ये हमने मार्क कर लिया. अब इनकेस अगर ये नीचे जाके बाउंस बैक करना चाहता है कहीं से, देखते हैं. गिव मी अ मोमेंट. I think I need to fix my stream, right? ये 720p में ही शो कर रहा है. I want it to be 1080p. I'll also fix that. अभी काम का टाइम है, काम का मेन काम करते हैं और ये फिक्स कर लेंगे. I also want to get rid of this headphones. I hope soon. Three minutes to market open. 2:35. This is how many time and minutes and seconds are left to market to open the gates. ये क्या है? Oh my god, what is this? This is a super trend. Is this VWAP? And what the? Breakout forecaster. Can we hide that please? Champion cross please.
No. Wealth signal. All right. Yep, wealth signal is showing us things. We have made a double bottom at a very crucial time. I would never want this to be. We have okay, so we can keep it 4. So me closing the gold trade was a bad idea, but market खुलता है तब समझ में आएगा it was bad or good. Just listen. 2200. Are we going to bounce from 2190 or 180, or are we going to go? Let's see. So what it can also do, I'll just do some things and check if it works. प्री लंदन का मार्केट में भी ये काम करता है क्या? फिबोनाची टूल. $20 seconds to market open. If I see a good trend, I'll also take a trade in my eval account like we did yesterday, but we took a bad trade there, and you know how trailing drawdowns work. Market has opened. All right. We tapped 38.2 and gold is going up. So this was my initial target of 3029, this trade that I took, which I think I got out somewhere here. This was my initial target. ये यहाँ पे आता तो मैं पहले ही निकल गया होता खैर, क्योंकि अपना स्टॉप लॉस अगर अपन यहाँ रखते तो ठीक है. अब गोल्ड स्ट्रेट अवे इज गोइंग टू बाय. असल रूप न्यूयॉर्क अपना 5 से 10 मिनट के बाद दिखाता है. Took a support from 38.2. Go to the 2-minute time frame. Please फिर गायब मत होना यार. Like come on यार. Getting into the buy territory. It can be one of those days straight away buys altogether. Same रहेगा सब कुछ. Minimum 200, maximum 500. This is what I'm aiming for. ना ज़्यादा लालच, ना अपना रिवेंज ट्रेड करने का कोशिश. जो मिलता है ठीक है, नहीं मिलता है ठीक है. कल दिन नया है, कल दिन नया अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा. जितने ज़्यादा रिग्रेट्स करूँगा एक ही गलती करके, उतना अपने आप को स्टूपिड समझूंगा, तो वो मुझे करना नहीं है. One thing I really want to do is I want to take a trade here. 30. इसको क्लोज करके ऊपर जाने देते हैं फिर. 15 मिनट पे देखें अगर. So I'll wait for this to close upwards and hold it here for me to take a trade there. I was just checking something. All right. We don't have a clear direction yet.
वो बॉक्स भी गायब हो गया। सही है। ओके, 5 मिनट पे लेके जाता है इसको, जहाँ हमारा बॉक्स और सब कुछ होगा। यस, लेट्स सी। We have trapped buyers right now, like 1, 2, 3, 4 candles. We have trapped buyers. First candle was a selling candle, 4 candles trapping the buyer candles, and this is the 5th candle, which looks bearish as of now on the 1 minute time frame. Are you not receiving enough video? How are you not receiving enough video? What did I do? We have frames being dropped. क्यों हो रहा है ये? Strange. यार मेरे एंड से तो सब सही चल रहा है, अब डेटा ही नहीं आ रहा इसको। What happened? ठीक हो गया होगा ये। Alright. We're seeing gold go up. Good, 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 good. I am going to take an trade in my eval account. Let's go 3 and buy. Took an trade in eval account on a gold trade, a long trade. This NQ wants to tap below before doing anything else. I'm going to take a sell trade in NQ before doing anything else. Let's see. Made a double bottom kind of a structure. Double tap that. Some indecision in the market. We might go to 170 on the indices first and then go back. Let's see. Huge buying pressure coming in. Let's go 170. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go 170. All right. I have closed an evaluation account trade of 170 here. Gold is going up, so I'm not going to touch that. Let's come back to our main account. About to touch 50%. Go gold, go, 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 go. I'll place a stop here. 3 more, 30 more pips for gold on the eval account. This was the trade you should have been in. I was in this trade, but obviously when you get like almost 150 pips, you have to trail your stop loss. So it took out again and then it is going up. So if it is now going up till here, I'm fine with that. Going to keep a tight SL for here. We'll see about that. कि क्या कर सकते हैं। हमने एक eval account में trade ले रखा है। We are 20 pips in profit right now. यार ये नीचे क्यों आ रहा है? नीचे आने का तो कोई सेंस दिख नहीं रहा मुझे इसका यहाँ पे।
अगर आ ही रहा है तो फिर इसे रुकते हैं सेकेंड. Let's wait for this 5-minute candle close up for gold, which I would show you here. Yes, that pressure, I don't like that pressure. Okay, gold के लिए अपन देख रहे हैं यहाँ पे. Going to add an alert. Gold अगर यहाँ पे आके है तो फिर देखते हैं. Gold's going up. स्टॉप लॉस इतना टाइट नहीं रखते, बट दिक्कत क्या है यहाँ पे कि ट्रेलिंग ड्रॉडाउन बहुत इफेक्ट करता है हमें. हमारा स्पेस ख़त्म करता है, हमारा बफर ख़त्म करता है. मान लीजिए अगर एक ट्रेड में $100 प्रॉफिट हो रहा है और आप चाह रहे हो कि अभी भी मैं ब्रेक इवन पे ही रखूँ, तो आप 3 बार वो 4 बार लोगे और आपका बफर साइज $500 है, तो आप पैसा लूज नहीं भी करके भी लूज कर रहे हो. तो एक वो चीज़ है जो that is what evaluation accounts do to you. It does not let you hold your trades. It is designed to make you not hold your trades. You cannot help and hold overnight trades because it does not allow you. Unrealized profits, if not taken, is considered as loss from your buffer. That's a negative thing. Well, let's see. अभी तक 0.50 यहाँ पे हमने टच नहीं किया है, तो I'm unsure. कोई भी ट्रेड लेने से पहले 1 मिनट का जो ये आप देख रहे हो ये हो रहा है यहाँ पे, ये देखो. तो इसमें तो कुछ भी ट्रेड लेना बेफालतू की काम हो जाएगी. We might see a good buy now. We're seeing a good buy now. Let's wait for a good candle close. गोल्ड जिस स्पीड से ऊपर जा रहा है, आज नया हाई बनाने के मूड में ऐसा लग रहा है. आई मीन नॉट आज, बट इट्स अ रियली गुड कैंडल. शुड टेक अ बाय हियर. चलो एक ही लेकर देखते हैं. हम एक स्टॉप इसको यहाँ पे लगाते हैं. ओके ठीक है. वी आर गुड हियर. नाउ आई एम सीइंग वन. यार ऊपर से सेलिंग प्रेशर इतना आ रहा है ना कि लग नहीं रहा बाय लेना चाहिए हमें. यू लुक एट दैट. दैट इज अ गुड सेलिंग प्रेशर. ये कैंडल अच्छा बना है यहाँ पे. 392, 491. I can take actually. I'll keep my stop here. अब देखते हैं. हमारा 442 ठीक है, चलेगा. Yep. Hopefully, let's see. So those are 4 micros that we are trading right now. All right, 10 points in, 13 points in, 20 points पे से ब्रेक इवन पे ले आएंगे अपन. But that should go even further up. Apple's crossing something. What are you doing, Apple? Acha, all right. All right. Before going for a dip, ये कैंडल बहुत पॉजिटिव क्लोज हो सकता था. बहुत पॉजिटिव क्लोज हो तो बहुत मज़ा भी आता. अभी भी हो सकता है, उसका नेक्स्ट कैंडल क्लोज हो सकता है, बट नोप नोप नोप.
Yep. Look at that. I still don't think ये नीचे जाने का है. मेरे को अभी भी ये लगता है कि at least two, it should come here first and then go down if it wants to. देखते हैं. All right, all right, all right. We took an L there. Did we have any news that we were not aware about? No, nothing like that. Gold is also seeing pressure here. We have tapped the 50% thing. If you have to go up, you go up now. I want to take this trade, but let's see. Gold's dropping. Alright, this is the trade that I am keen to take. 1 minute looks good, 5 minutes does not look good. That is what I'm avoiding right now. Where you go? I so want to buy this right now. Looks good to me to buy. फिर से ऊपर सेलिंग प्रेशर दिख रहा है. अब अच्छा नहीं लग रहा बाई के लिए. Tapped 50%. Like look at that. It tapped 50%. 370, 390. Good 20 points. Took an SL on the gold. Okay, we are finding resistance on 0.50 on Apple as we just marked थोड़े से देर पहले. बट लग नहीं रहा कि होल्ड करेगा. वो रेजिस्टेंस ऊपर ही जाना चाह रहा है. If it comes down here and touches this, I am interested in buying here.
Mm-hmm. Gold is on a roller coaster right now. Made a double bottom on a 1 minute. That is why I did not buy it. Haha. We have not touched 0.61 yet. 61. This golden pocket. We might reverse from here, but we have not tapped that. I'm waiting for it to be tapped. If not, it's fine. अच्छा कैंडल बनता है 1 मिनट पे तो भी एक ट्रेड ले सकते हैं. It's more of a lower high, lower low formation on the 1 minute. Gold is struggling. ये छोटे छोटे ग्रीन कैंडल्स जो 1 मिनट पे बना रहे हैं ना, इनको खा जाएगा सेलर. ओके. इस तरह an ऑप्शन कि मैं इसे हर जगह रख सकूं, हर टाइम फ्रेम पे ये मुझे दिखता रहे. अभी तो नहीं दिख रहा है कुछ. कॉन्फ़िगर चार्ट. नो. Okay, more of an equal lows there. 4 1 minute candles had almost equal lows. I like the music today. अब नीचे से बाइंग प्रेशर आ रहा है. फील लाइक आई शुड बाय दिस. ये कैंडल क्लोज होने का वेट करते हैं. Gold's really fighting there to go up. Let's see what Apple is doing. Apple is also fighting to go up, facing resistance at 0.5. Nvidia is dropping.
dropping and dropping and dropping, trying to stabilize but dropping. We might see 117.5 on Nvidia. That is a good candle. Should buy this. Let's see. नेकलाइन तक वेट करते हैं पहले इसका, यहाँ तक. Did it ever occur to you that they might have used the rug to carry the body on? Well, I should say we have. All right. Let's see some good points here. Gold still fighting. Should give us 40 points almost. Let's see. Going to trail this a bit. Thank you, Fibonacci. I don't need you if you do this. Going to trail this here. This is where I want to keep my profits, to be honest. Here, this is where I want to keep it, and I really think this would go there. But let's see. We have good. अरे यार, मैं good बोलता हूँ और ये नीचे जाने लग जाता है. चलो कोई नहीं, देख रहे हैं. Let's see. एक डबल बॉटम का नेकलाइन ब्रेक कर रहा है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो थोड़ा सा नौटंकी तो करता ही है. बैठते हैं अपने, देखते हैं. That is what I want it to be, like 472. This is where I want it to go. Gold is facing resistance, NQ is doing good. We have really good blue candles. Let's go. Let's push. All right, we might face some resistance here. I'm gonna take this here. Also एक ये भी देख लेते हैं कि हमारे पास आज का हमारा हिसाब किताब कैसा रहा है. हमें ज़्यादा तकलीफ तो नहीं उठानी चाहिए. आज का PNL हमारा कुछ खास नहीं रहा है. So okay, you started dropping. Don't drop yet. Should I close this? I don't want to actually. बैठते हैं. हमेशा तो क्लोज ही किया है, हड़बड़ा के, डर के, सब कुछ करके. आज बैठ के देख लेते हैं. क्या बोलते हो? बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब आप अगर देखो तो 60 पॉइंट इसके लिए कुछ नहीं है. ये यूं दे देगा 60 पॉइंट, और बिकॉज दिस इज द अर्ली मार्केट राइट नाउ, इट शुड मूव 60 अप. Somebody said patience pays off. A lot of people said patience pays you off.
लेट्स कीप सम पेशेंस, वी हैव गुड कैंडल्स, हमें अपवर्ड ट्रेंड ही पता है, हमने एक एंट्री ली है, हम बैठे हैं, हमारा स्टॉप लॉस है यहाँ पे जहाँ पे हमें लॉस तो नहीं होगा कम से कम। ठीक है, देखते हैं। यही अगर मैं मिनी लॉट लेता तो मैं शायद नहीं बैठ पाता अभी इतने देर, बट अभी मेरे को हिम्मत है कि मैं बैठ पा रहा हूँ। गोल्ड इंडिसाइसिव हो रखा है, मिनीज में फ्लक्चुएशन इतना ज़्यादा, यहाँ पे अमाउंट इतना ज़्यादा दिखने फ्लक्चुएशन दिखने लग जाता है कि डर लगने लग जाता है अभी के लिए, मेरे लिए तो बीइंग अ न्यू ट्रेडर। तो अच्छा है कि यहीं पे बैठे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं। आई थिंक ये जो यहाँ पे थोड़ा सा रुकावट इसको मिल रहा है, अब थोड़ा ज़्यादा रुकावट मिलने लगा। आई थिंक वी आर गोइंग टू हिट आर एस एल। यस, अचानक से एक सेल प्रेशर आया, अचानक से एक बाई प्रेशर भी आया, मतलब मुझे लग रहा है एक जर्क दे के ये ऊपर जाएगा, ऐसा फील हो रहा है मुझे। Look at that. वो होता है ना, यूं फट से जर्क दे दिया हमने, ऊपर चल गए, वैसा। One thing is for sure that कि normally majority people do not want it to go down right now. Yes, we are looking at that jerks and that is one jerk. अब यार अगर ये सस्टेन नहीं हुआ तो फिर ये नीचे आ जाएगा। कम ऑन, कम ऑन, ये यहाँ पे बहुत सारा सेल ऑर्डर्स होगा इसीलिए ये ऐसा कर रहा है बिहेव। वहां तक तो चल ही गए थे, कोई नहीं। ऑल राइट, सो आज का ऐसा है कि हमारे पास सिर्फ $31 का है। हमारा ड्रॉ डाउन $400 $350 लगभग कम हो गया है बिकॉज ऑफ दिस। कल 786 was our max balance and we are at 50444। हवा हो गया, हवा। should have kept my SL here आपको समझाने के बाद, ठीक है कोई नहीं। I think this is the doing of Apple. Apple ही spike मार के फट से नीचे आया है, maybe because of that. सो जर्क आपने मारा, बट हमारा टेक प्रॉफिट कहीं और था, इस उम्मीद में कि हम वहां तक तो जा ही रहे हैं, बट कोई बात नहीं, होता है। हड़बड़ाना नहीं है हमें, मैं खुद को ये बिलीव दिला रहा हूँ, हड़बड़ाना नहीं है।
वो ट्रेड जबरदस्ती का नहीं, घुस जाने की थी ट्रेड में, बैठते हैं देखते हैं। आई रियली वॉन्ट टू टेक अ ट्रेड ऑन गोल्ड हियर टू बी ऑनेस्ट। अब गोल्ड उस रेजिस्टेंस से बाहर गया है और दिखा रहा है कि भाई हमारे अंदर थोड़ी शक्ति है, तो विल बाय दिस एंड आई विल कीप माय एसएल राइट हियर ऑफ द कैंडल। तो ये हो गया हमारा, और हम अपनी इवैल अकाउंट में भी गोल्ड को बाय करेंगे। एक बार गोल्ड को बड़े टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। एक रेजिस्टेंस जोन के पास है, so let's wait for it to close. I should not have taken that trade. रेजिस्टेंस जोन हमें दिखा था बट हमने गलत किया कि, पर ठीक है, अब घुस गए हैं तो बैठेंगे, अब बेमतलब का निकलेंगे नहीं। Oh, six. That was a huge SL actually for me, but still I'll hold. या तो पहले देख लेना चाहिए था, या अब देख लिया तो उसका भुगतान कीजिए। एक बड़ा सा डबल बॉटम ऑन NQ मेकिंग अ गुड blue candle. I'll show you what I'm talking about. This is what I'm talking about. This is the spike that I was talking about. Never mind. Should have been realistic here. Can't take a trade here. आओ थोड़ा सा नीचे आओ। If I'm taking this trade, this is going to my last trade for today. If this trade does not work out for me, I'm going to close it. Over trade करूँगा नहीं तो मैं। I'll keep my SL here. Yep. और इसे यहीं रखते हैं नेकलाइन पे। Actually थोड़ा सा और नीचे। Yep. Bringing it here, bringing it this up. Going risk free, almost going risk free. थोड़ा सा. Now this should actually go up, मतलब up. अब हमें वो लेवल मिलना चाहिए जो कि यहाँ है, एक्चुअली इसके ऊपर है, ठीक है। गोल्ड भी जा तो रहा है सही, उससे ब्रेक कर दिया है, रेजिस्टेंस मिलेगा भी तो थोड़ा सा ऊपर मिल सकता है। लेट्स सी। ट्रेड्स में बैठना आना चाहिए। छोटा ट्रेड लोगे, बहुत बड़ा ट्रेड नहीं लोगे, लॉसेस नहीं लोगे तो फिर बैठ पाओगे, जो कि मुझे धीरे धीरे समझ आया है। अभी भी समझ नहीं आया पूरी तरीके से, पर समझ आया है। Bring it closer now. 4 पॉइंट का एसएल है हमारा। इसे भी ऊपर ड्रैग करते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा एसएल है। तो हम उसे क्लोज नहीं कर रहे हैं, हम बस वेट कर रहे हैं कि ये एटलीस्ट 3038 तक चल जाए। 3038, अरे यार वो गोल्ड स्पॉट है, सॉरी, तो मतलब समझ रहे हो ना आप। कीपिंग इट ब्रेक इवन नाउ।
Now pushing this up here. ये हो सकता है कि ये यहाँ तक आए, हमें डराए, फिर ऊपर जाए, ये भी कर सकता है। गोल्ड मशक्कत कर रहा है ऊपर जाने के लिए। कम ऑन गोल्ड। अरे यार गोल्ड। अच्छा खासा $100 दिखा रहा था यहाँ पे। ये मेरा ड्रॉ डाउन हिट करता है ना, सब थोड़ा दिक्कत ही है। क्या ही इंसान बैठेगा ये इतना परेशान करेगा तो। Let's see. ना मुझे एनक्यू लगता है नीचे जाना चाहिए, ना मुझे लगता है गोल्ड नीचे जाना चाहिए। मैं दोनों ही मुझे लगता है कि ऊपर जाना चाहिए। तो ऑलमोस्ट 22-23 मोर पॉइंट्स फॉर माय एनक्यूटीपी। वही कर रहा है जो मुझे लग रहा था, ये सता रहा है। जाएगा धीरे धीरे। ऐसा भी नहीं है ना कि मैं लगा के अपना स्टॉप लॉस लगा दूं, मुझे लगता है गोल्ड धीरे धीरे ऊपर चला जाएगा, मुझे पूरे टाइम स्क्रीन पे नहीं बैठना है। बट क्या होता है, अब थोड़ा ऊपर चला जाए फिर ये बाबू साहब वापस नीचे आ जाएंगे अगर, तो लग जाएगी हमारी। हम ऑलरेडी $350 का इसमें हैं, तो इसीलिए मैं नहीं चाहता वो करना। नहीं, अभी भी नहीं लगता गोल्ड नीचे आएगा। So I'm going to move this here, actually here. अब और ज़्यादा लॉसेस या वैसा कुछ नहीं लेंगे अपन। जा रहा है, जाते हैं, देते हैं। कम ऑन। ये कहाँ से आ गए बुलबुले? इनको देखिए, कुछ जा रहा है तो कुछ नहीं जाना चाहता है। यार गोल्ड क्या कर रहे हो? कीपिंग इट टाइटर नाउ, मूविंग इट हियर, लगभग इस पे। कोई बात नहीं। Where are we standing? We are standing at 662. Drawdown. PNL is 250 today. Reducing because gold is dropping. I'm gonna close you. I don't want anything to do with you if you do that. 250 तो बहुत ठीक है, कोई बात नहीं। तो 214 पे आ गए अपन। So we made 200. That is the minimum that we thought we would make. कोई बात नहीं, ठीक है। मिनिमम तो हमने बना लिया है, और थोड़ा सा और टाइट नहीं रखते हैं तो हम वो भी अचीव कर लेते हैं। ये चीज मुझे लगता है ये अचीव कर ही लेंगे अपने। तो ऐसा है। ओके, ऑलराइट। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल बाय दिस हियर, आई विल कीप माय एसएल हियर and I'll keep this here. ठीक है, fair enough. अब इसको छोड़ के जा सकते हैं। That is it for me today. ये स्टॉप लॉस खाता है ठीक है, टेक प्रॉफिट खाता है ठीक है। एक क्योंकि वन सिंगल लॉट है तो मेरा ड्रॉडाउन बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चलेगा ये हमारे लिए। See you guys tomorrow. Bye bye.